नमस्कार। कोलकाता के साइंस सिटी में गुरुवार को कई स्कूल के विद्यार्थी एवं शिक्षकों के लिए मानक ब्यूरो द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में उन्हें प्रशिक्षण दिया गया कि किस तरह पता लगाएंगे कि वस्तुओं की गुणवत्ता क्या है एवं कितनी है। Welcome to the Standards Club Carnival 2025, proudly organized by the Bureau of Indian Standards, Kolkata Branch Office 1. This grand event was a celebration of quality, innovation and safety. This year, we were honored to host this exciting event on the 2nd of January 2025 at the Science City Seminar Hall, Kolkata. The program was graced by Professor Bhaskar Gupta, Vice Chancellor of Jadavpur University. The Standards Club Carnival was more than just an event. It served as a platform where students, industry leaders and stakeholders came together to experience the impact of standards in fostering innovation and progress. Attendees explored the interactive stalls where standards clubs from schools showcased their innovative projects, promoting quality and safety in everyday life. Here we are having a lot of geography related stuffs, but here we are exhibiting a security model. Like we all know how much important security is nowadays. And basically this is a laser security system, which is much more efficient. As we can see, there are sensors and LEDs. So we have used two models. One is hydraulic lift and one is automatic fire extinguisher. The hydraulic lift is fitted beside a shopping mall to show that to lift a car or heavy objects in a parking slot. Coming to its mechanisms, these two pistons are pulled back. The Bureau of Indian Standards (BIS) is a national body, the national standard body of India. It conducts testing of samples, provides certificates, thus developing the standards for products and services used in India. People take crucial medicines like blood pressure medicine, sugar medicine, which are very crucial to take in the time frame of the medicine. So I have made an app by myself. It is a air quality sensor. Its basic use is to measure the air quality of an particular area. It can measure or detect pollutants like SO2, NO2, CO2, CO. This one is used in Indian NCC and this one is used in European countries. ये जो है इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक बट सिस्टम है, बट एक्शन सिस्टम बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में इसको। इसमें क्या होता है, जब हम कोई बुलेट डालते हैं तो उसका जो एम्यूलेशन का जो रिकॉइल आता है वो ये बाहर गिरता नहीं है, जिसके कारण एक पॉसिबिलिटी होती है वो हमारे मुंह पे हिट नहीं करता है। ड्यू टू दिस वी आर एसोसिएटेड विद BIS फॉर लॉन्ग एंड वी encouraged establishment of standard clubs in different Kendriya Vidyaliyas across the country, and due to which certain things are being known to the children at a very young age. What is standardization, what are quality mark, and how things can improve for their betterment in future. হ্যাপি নিউ ইয়ার। নমস্কার, আমি খাস কৌশিক। আজ এখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডস ক্লাব কার্নিভাল এবং সেটা আয়োজন করেছেন ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস, মিনিস্ট্রি অফ কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স, ফুড অ্যান্ড পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন। আমাদের এই একটি স্টল রয়েছে ইস্টার্ন রিজিওনাল ল্যাবের তরফ থেকে টু সেন্সিটাইজ ইন্ডাস্ট্রি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ স্টুডেন্টস যে রেলিভেন্স অফ টেস্টিং ইন ডে টু ডে লাইফ অফ এ কমন কনজিউমার কীরকম। The BIS Eastern Region Laboratory stall provided insights into the meticulous testing process that ensured the safety and reliability of products. Students engaged in the fun and educational science games, which were designed to be both entertaining and educational, emphasizing the importance of standards in a creative and hands-on way. As a special treat,
all participating students enjoyed a sponsored visit to Science City, making the day even more memorable. The day's celebrations culminated with cultural events that mesmerized and inspired the audience. The audience experienced the charm of ventriloquism, magic, and quiz, where humor and storytelling highlighted the importance of Indian standards. বলপয়েন্ট কলমে নিম্নলিখিত গুলির মধ্যে কোন ধরনের কালি ব্যবহার করা হয়? স্নিগ্ধা के लिए स्निग्धा विद्या। आज का जो ये कार्निवल है ये किसने ऑर्गेनाइज किया आपको पता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब क्या है पता है? ये हम लोग के इंडिया में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उन लोग का स्टैंडर्ड्स बताते हैं हम लोगों की, मतलब हर चीज़ का क्या स्टैंडर्ड है, सर्विसेज का स्टैंडर्ड, प्रोसेसेस का स्टैंडर्ड, और वो प्रोडक्ट्स को सर्टिफिकेशन देते हैं कि वो सर्टिफाइड है हम लोग के यूज़ के लिए, और टेस्ट करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कि वो सेफ है हम लोग के लिए। हमारे आम जिंदगी में ये कहाँ पे काम करता है, मतलब इन रेगुलर लाइफ हम लोग कहाँ? यस Jewelries, food products. কিনতে গেলে চিনতে হবে হলমার্ক ISI। The event concluded with a vibrant musical performance that left everyone energized and uplifted. The Standards Club Carnival 2025 was a day to remember, a celebration of standards that empower innovation and quality in every aspect of our lives. Together, we build a future driven by excellence. Thank you for being a part of this incredible journey.